नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका स्टेप अहेड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम की। सबसे पहले जान लेते हैं क्विक फैक्ट्स क्या है। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों चलेगा। ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन है इसकी 2 साल, यानी 2 साल का ये प्रोफेशनल प्रोग्राम है। पोजीशन है 46, यानी 46 फेलोज लिए जाएंगे। एज का जो क्राइटेरिया है दैट इज 30 ईयर्स, बिलो 30 ईयर्स। स्टाइपेंड आपका होगा 75,000 पर मंथ एंड लोकेशन इज पैन इंडिया। So, according to this, like eligibility and quick facts, you can decide कि ये आपके लिए है कि नहीं। Let's understand more about it. So, सबसे पहले let's understand BIS यानी Bureau of Indian Standards. So, just to understand very quickly and very easily, if you see any ISI marks, so these marks are given by the Bureau of Indian Standards. So, this bureau is provide some standards to the different like hallmarks for gold, ISI अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये सारा सर्टिफिकेशन जो प्रोवाइड करता है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ लेते हैं थोड़ा सा इस यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के बारे में। तो BIS एक स्टेचुरी बॉडी है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So this is a national standard body of India is responsible for activities in the field of standardization, product and system clarification, hallmarking, laboratory testing in the country. For the young professional program, BIS is offering excellent opportunity to Indian nationals. सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिनका प्रूवन एकेडमिक क्रेडेंशियल यानी एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रोफेशनल अचीवमेंट उन्होंने किया है, गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन स्किल्स। उनके लिए यंग प्रोफेशनल्स के तौर पर उनको इंगेज करेंगे। इन्होंने अपने वेबसाइट पर एक डिटेल एडवर्टीजमेंट निकाला हुआ है। द लिंक ऑफ दैट एडवर्टीजमेंट इज इन द लिंक ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो ये एक बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट इन्होंने निकाला है। इसमें दे जस्ट सेइंग कि ये जो कौन कौन से पोजीशन है, उसमें कितनी पोस्ट है और क्या रिक्वायरमेंट है। सो देर इज अ पोस्ट फॉर यंग प्रोफेशनल स्टैंडर्डाइजेशन डिपार्टमेंट में देर आर 4 ऑफ पोस्ट आर रिक्वायर्ड। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज BTech, BE और मास्टर्स डिग्री इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। डिजायरेबल मीन्स this is essential, this is desirable, higher qualification, research experience, published paper, post qualification experience। 60% आपका होना चाहिए मिनिमम percentage of marks। number of posts are 4, minimum of 2 years of work experience relevant to the job description। coming to the research analyst, they just require graduation in any discipline। desirable is any higher qualification, either you post graduate, अगर आप हैं मास्टर्स किया है would be okay। research experience होना चाहिए। 60% is the minimum criteria। 20 positions are there, they are not asking for work experience, right? So age for all is below 35 years। so sorry, I mentioned the 30 year, but the age criteria is 35 year। money is 70,000 per month, ठीक है, fixed for 2 years। So coming to the third position, that is management system clarification department, right? Essential graduation in any discipline और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। सो ग्रेजुएशन वाले 2 पोजीशन में अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट, मैनेजमेंट सिस्टम। डिजायरेबल हायर क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम क्लैरिफिकेशन। 22 positions are there, minimum of 3 years of work experience। So if you don't have any work experience, apply for research analyst। if you have 2 year work experience in relevant field, apply for standardization department। and if you have 3 year of work experience, apply for management system clarification department। coming to the more, so job location would be pan India, right, depending upon the requirement। selection process क्या होने वाला है? so all the applicants received application जो आप भरोगे received होंगे, वो scrutinized होंगे और shortlist होंगे। candidates will be shortlisted in the light of their qualification, experience और application जो भरा है उन्होंने, mere fulfillment types। so then shortlisted candidate will be called for practical assessment, written assessment, technical knowledge assessment, interview। BIS reserve the right to for the application। this is a 2 year of applications, right?
2 ईयर के लिए ये आपका एंगेजमेंट होगा, यानी एज एन यंग प्रोफेशनल आप 2 साल तक काम करोगे। नेचर ऑफ एंगेजमेंट, it will be purely contract basis because it's for 2 year only. Remuneration, consolidated monthly remuneration is 70,000 per month, right? Fixed for 2 years. TADA not will be given, right? Leave, there will be 12 leave. Then working hour 9 to 5:30, right? No other assignments, like this is a full-time fellowship, so you cannot do other assignment. Travel, medical clearance, this like medical fitness and police verification will be required. Termination भी हो सकता है 30 days के prior उस पर. Confidentiality of data and documents is required, right? Other terms and conditions are candidate should not engage has submitted any false fabricated information. सारा आप true information डालें, आपका valid email ID, मोबाइल नंबर हो. Candidates also should, all the stage of engagement is purely contractual basis, ठीक है. सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आप अप्लाई करोगे कैसे, ये इनका वेबसाइट है, बट यहाँ से डायरेक्ट आप अगर इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप खोजते रह जाओगे, ठीक है, यू वुडंट गेट इट क्लियरली. सो फॉर योर रेफरेंस आई हैव मेंशन्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन for application, right? So what is the last date now? So they are saying it 21 days from the date of publication. So this advertisement has been published on around 12th June, right? So roughly it's around 10th or 11th July is the last date, but better to apply before that. There is no fees required, right? And then there will be like all further announcement to on the bis.gov and bis.gov.in, right? As well as yphrd@bis.gov.in पर आप मेल भी कर सकते हो. Now come to the application part. So this is the so if you go to the application link, you need to just register for it, and after registering and signing in, you will be coming to this dashboard. So YP recruitment, young professional recruitment, go to here, advertisement, you will get that advertisement, this one, right? And then application form. So there will be 3 options: apply for standardization, apply for research analyst, apply for MSc. So either anyone, like if you will say standardization, there will be first round of information like about yourself, personal information, then educational information, then declaration, and then finally finish. This will be the application process. So I think this opportunity is better if you are coming from the technical background or from the research background. If you would like to continue your journey with the standardization, or if you would like to have an hands-on experience with the government, ये better opportunity है. So आपको इसमें अगर कोई भी help की ज़रूरत है, like if you need any help while filling the application, any requirement, you can connect with us. But most importantly, there is one website of it. Go through it properly, understand it, and there is an advertisement of it. Go through it properly, understand it. Both link is in the description, right? So इसका advertisement का link भी है और website का link भी है. Kindly go through that. Other than that, आपको और भी कुछ अगर requirement है तो you can reach out to us, right? So I think thank you so much. इसमें आप अप्लाई करिए. If you need any help, as you know, StepEd provide voluntary help. You can connect with us. The link for our Telegram channel is also in the description. You can connect on the Telegram channel and you can message any admin for the support. Okay. Thank you so much. All the best. All the links are mentioned in the description. You can go through that. Thanks a lot. Be happy, stay healthy, and step ahead.